Hello children, what's up? My name is Arun Thakur and I welcome to you in this video tutorial, and in this video tutorial I will be taking up your class 12th chapter name is Haloalkanes and haloarenes. This is your chapter number 6. Before that, let's see the objectives so you will able to come to know the name. The name of haloalkane and haloarene according to IUPAC system and nomenclature. You will be able to describe the reactions which involve the preparation of haloalkanes and haloarenes and understand the various reactions that they undergo. You will able to correlate these structures. You will able to correlate the structures of haloalkanes and haloarenes with the various type of the reactions. You will able to use this stereochemistry as a tool for understanding the reactions mechanism. You will able to appreciate the applications of the organometallic compounds. You will able to highlight the environmental effect of the polyhalogen compounds. Now let's see the outline. It's very important to see the outline of something, right? So here firstly we will be covering the introduction, then classification, then nomenclature, after that physical properties of haloalkanes and haloarenes. The third part we will be doing the method of preparation. Fourth would be the chemical properties. Fifth would be the optical isomerism, and sixth would be the SN1 and SN2 reactions, then polyhalogen compounds. So with this we will cover our chapter. Yes, so let's understand by the very basic question that what is haloalkanes. So these are nothing, these are the organic compounds which has been formed by the replacement of the one or more hydrogen atom by the halogen atom. For example, chloromethane. If I show you this structure of chloromethane, methane means simply CH4. This would be the structure of methane, right? But what I'm doing or drawing it as an open structure, it would be somewhat like this. Hope so you can clearly able to see my screen. So what I will be doing, I will be removing this hydrogen from here and replacing this hydrogen by a chlorine or any of the halogen group. Right now I am removing it and moving the chlorine to this. So what this structure would be chloromethane. What it would be chloromethane. Hope you have understood. Similarly, if you will replace two hydrogens, this would be dichloromethane. So etc. This could be the examples you can understand. Hope so you got the idea what is the meaning of haloalkane. So structurally they had also shown you that it's nothing, just you are removing hydrogen and adding halogens to in the place of hydrogen. Remember that halogen group includes your, again I think you may know, but again for for the clarity I am again telling you what does it mean. Halogen groups include, basically you will use four, that is your iodine, bromine, chlorine and fluorine.
Generally you will see that you are continue to not using fluorine and iodine, because one is very reactive and another one is very slow. So generally the theory revolves around the bromine as well as chlorine. Yes, hope so you got it, you are understanding what I'm saying. Now see, let's see the examples of our haloalkanes. Hope so you can clearly able to see. Okay, so first example is of bromomethane. What it does, firstly, methane, I told you it contains the 4 hydrogens like this, and again if I replace one hydrogen by the bromine, it would say what, it would give me this structure, that is bromomethane. Now next structure is your chloroethane. It means 2 carbons. Now in order to complete its valency, we have to fill the hydrogens accordingly. You know it from your GOC, that is General Organic Chemistry, in your class 11th. Yes, you know these things from your GOC, right? So here what I'm doing, I'm replacing one hydrogen, this chlorine I am replacing, not chlorine, means here there must be a hydrogen, and I had replaced that hydrogen with the chlorine, right? So this structure is known as chloroethane. Next structure is your idopropane. Ido means iodine, just replace hydrogen by iodine, you will get idopropane, and propane means 3 carbon chain. Of course you have to complete its valency by filling the number of hydrogens. Yes, perfect. Now let us see the meaning of haloarene. So if one or more hydrogen is displaced by the halogen group in the aromatic ring, you must have done the classification like aliphatic and aromatic in your previous 11th class. Remember, aliphatic means straight chain, branching. That is aliphatic. Aromatic means it's like a ring, right? If I show you the benzene ring, you remember how the benzene ring looks like? You must be knowing that. Just try to. This is somewhat benzene ring looks like. If you add here CH3, can you please tell me the name, what this structure is known to be? Yes, any guesses? Yes, if you are saying this is toluene, yeah, your answer is right, this is your toluene. But similarly, if I add if I add one more thing, and what that thing would be, replacing CH3. Okay, let me ask these questions later. So hope so that you have got idea. If one or more hydrogen is displaced by halogen atom in aromatic ring, the product is as haloarenes. So the structure is in the front of you children's. Hope so you can easily able to see. Yes, so what you can able to see, you must be able to see that. Just a second. First structure is of benzene. You know benzene, removing one hydrogen and adding any halogen group to it, this would constitute haloarene. It would be better if I show you by my own instead of showing this diagram. If this is my benzene, I already had drawn it. Okay, now you know this bond
You know what this is showing? Is due to resonance, this hole has attained some partial charge. Or let me just draw that ordinary structure for you. It looks somewhat like this, right? Right now, I think I had drawn it right. Yes. So here is my carbon, and each carbon, in order to complete this valency, we have to complete what? Come on, it's hydrogen. So how much hydrogen will come here? Of course, one. One na? Because one is here. One, two, three, and four. Yes. Again, one hydrogen here, one hydrogen here, one hydrogen here, one hydrogen here. Now what I'm doing, I'm just any x means any halogen group. I'm bringing any halogen group to it. Let's suppose I'm bringing chlorine and just removing this hydrogen and placing this chlorine here. Right, this would somewhat look like just removing everything and placing here chlorine. So this would be my haloarene. Hope so that you have understood this very well. Yes, so similar thing is being provided you here, which shows you that removal of hydrogen and the addition of your X in your aromatic ring is considered to be haloarene. Got it? Yes. Now let's see the importance of halogen derivatives, because now you understand what are haloalkanes and haloarenes. Now let's understand the importance of halogen derivatives. So halo derivatives, organic compounds, have many important main kinds, and let's see what are these important main kind. Number one, they acts as a solvent to the non-polar compounds, because you know that like dissolves like. From this I frames the statement from the chapter solutions, your chapter 1. Yes, from here it is written that like dissolves like only. You must have here लोहा लोहे को काटता है. Similarly, here also polar will dissolve polars only. Yes, so this could be used in the medicine, in the pharmacy, in the research work. Example is here chlorophenicol, that is the medicine to treat the typhoid. Right, this is what its structures look like, and you can clearly state it's you can clearly see this is benzene ring. Here there is OH, so you can clearly able to see that this structure also contains your organic chemistry. Next one was chloroquine, that is medicine used to treat malaria. Showing you this structure, it is somewhat look like that. Fourth would be some of the fluorinated compounds are being developed as a blood to substitute in surgery. Right? Halothane is used as an anesthetic during the surgery. Right? इसको बोलते हैं हम to make the person unconscious. बेहोश करने के काम आती है. This is what its structures look like. Thynoxine is used to the treatment of goiter.
goiter, you understand? Structure is somewhat look like this. Goiter, when your throat, your thyroid gland does not produce, like this is the situation of goiter. Even it is present in table salt. That's why it is referred the person who having this goiter is to eat the iodine. And we know Tata Salt has, this is not a promotion, but Tata Salt have iodine in it. May other salts may have, but I know the name of it only. Now, as starting material, it is used for the synthesis of many compounds as the starting material. So here it is showing that alcohols, arenes, cyanides, isonides, amines. So all these compounds are RX. You understand? This is what, this is your CH group and this is your halogen. This is basic bond, and you can clearly see that all these bonds has been found from the one, that is RX bond. So RX bond is very important. Now most important thing, that is the classification. It's very important to study the classification properly, otherwise this will cause you the problem not just in this chapter but also in further chapters. Yes, so let's see the classification. So on the basis of the number of halogen atoms attached, these could be classified as monohalogens, dihalogens and polyhalogens. If single halogen atom is attached, that would be monohalogen or monohaloalkane. 2 means di, many means poly, tri means 3, tetra means 4, penta means 5. So similarly this thing goes on. Similarly, based on the hybridization of carbon atom of CX bond of mono compounds, these could be classified on the two categories. On the basis of classification, first would be sp3 and sp2. So compounds containing sp3 CX bond, where X could stand fluorine, chlorine, bromine and iodine. And I told you maximum of time you will see what? Chlorine and bromine, because fluorine is very reactive and iodine's reaction is very slow. Okay. Compounds containing sp2 CX bond, it's the hybridization. Now let's move further. Now mono halo derivatives. Can you able to see this? Single chlorine is being, means one single hydrogen is being replaced by a single chlorine, hence this is your monohalo derivative. Next would be dihalo derivative. See its example. 2 chlorines have come in the place of or substituted the hydrogen, hence this would be your di. Here chlorine, see its name, 1,3 dichlorobutane. How butane? See, if you see the structure, it is somewhat like this: 1 carbon, 2 carbon, 3 carbon, 4 carbon. I think this should not be there. I have actually drawn pent in. Okay, this is what its structures look like. If you will count, these points are considered to be carbon.
So here is substitution and another substitution is here, chlorine. So if you will name it, just a second, if you will try to name it, it would be 1, 2 and 3, right? This would be first position, this would be second, third. So in your first and third position there is the substitution of dichlorobutane, hence you have write this name. Similarly, in the case of haloarenes, got it? Next would be your again the another examples of the dihaloderivatives. You can clearly see these and also read their names. Then comes trihalloderivatives again. 3 chlorine are substituted in the place of hydrogen. Now this is again an important classification. So guys, here you have to remember that compound containing sp3 CX bond, where X could be your fluorine, chlorine, iodine, right? So you have to understand one thing basically, कि जहाँ पर भी आपका X आएगा, X means either your fluorine, chlorine, bromine or your iodine. So you have to understand accordingly. Okay. So here comes your alkyl halides. What are alkyl halides? What is allylic halide and what is benzylic halide? So this is basically how you can classify it further. How you can classify it as a further, right? So see, allylic means simply RX bond. This is your allylic bond. But which bond? Your allylic, not allylic, sorry, alkyl. This is your alkyl halide. जो आपने सिंपल पढ़े हैं अभी तक, these all were considered to be alkyl halides, right? Got it? Okay. Now see this. What is your allyl halide? This was alkyl. This was allyl. All L halide. So here you have to understand. देखो alkyl आपको पता चल गया क्या होता है, ठीक है? ये देखो, this is which group? alkyl group, right? इसके साथ क्या अटैच है? हेलोजन. अभी क्या अपना alkyl halide. For example, this. See this carbon. This is sp3 hybridized, right? Attached to one halogen. So this would be a alkyl halide, right? Let's see the next. Now do you remember what is homologous series? Do you remember it? This is the series for the alkyl halides. Because अगर आप डिफरेंस निकालोगे तो वो सेम आता है, ठीक है? Even the properties are somewhat matching. That's why this is
homologous series of the same family. ठीक है, ये आप बता सकते हो कि ये कौन सी सीरीज है? यस, एल्केलाइल, राइट। अगर मैं इसको 2 कर दूँ 1 की जगह, देन एल्केन्स, बिकॉज आपको पता है एल्केन -1 हाइड्रोजन गिव्स यू द एल्काइल हैलाइड। ठीक है, उम्मीद है समझ आ रही है बच्चों, आई एम नॉट मेकिंग यू बोर। ठीक है, अब बेस्ड ऑन दिस सी एक्स बॉन्ड मतलब सॉरी, ये बेसिकली आर एक्स बॉन्ड के बारे में ही बात कर रहा है। दैट अकॉर्डिंग टू दिस बॉन्ड these could be classified into the 3 categories, that is primary, secondary and tertiary. What happens in the primary? For example, ethyl chloride. Guys, hope so that you can clearly able to see that in your primary carbon only a single substitution is there. Substitution I mean to say सिर्फ एक ही मोलिक्यूल लगता है, मीन्स एक ही सी एक्स बॉन्ड की। बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड ये 3 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। ये तो आपको पता लग गया, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। Now what is so special about the primary? The special thing about the primary is that यहाँ पर आपका सिंगल एक ही आर एक्स बॉन्ड आता है। ठीक है, आर एक्स बॉन्ड एक ही आता है। सेकेंडरी में आपके 2 बार आते हैं। देख पा रहे हो आप कितने बॉन्ड आए? 2 आए ना, तो ये 2 डिग्री का हो गया। सिमिलरली अगर आप टर्शरी का देखोगे तो इसमें 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड तक ये चला जाता है। और यहाँ पर एक्स तो आएगा ही, बिकॉज दिस इज द चैप्टर अबाउट हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। ठीक है, तो आपको ये समझ आ गया होगा बच्चों कि जितनी आपकी डिग्री बढ़ती जा रही है उतनी बार आपका आर एक्स बॉन्ड उस कंपाउंड में आ रहा है। सो दिस सिमिलर थिंग हैज़ बीन शोन यू हियर आल्सो। व्हाट इज शोन? इफ यू ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न यू कैन क्लियरली सी दैट कार्बन एंड कार्बन, देयर आर 2 कार्बन्स and you can see that this carbon is attached to entirely different group. I mean to say that is CH alkali group. This is basically CH3 attached to the carbon, and here carbon is being attached to firstly here chlorine, and here you are having hydrogen and then hydrogen. So this is what the primary, secondary and tertiary means. Hope that you have clearly got an idea that what does primary, secondary and tertiary means, कि कितनी बार आर एक्स बॉन्ड उसमें आ रहा है। ठीक है, 3 बार आ रहा है तो टर्शियरी, 2 बार आ रहा है तो सेकेंडरी, और 1 बार आ रहा है तो प्राइमरी। गॉट इट। नेक्स्ट कम्स हियर एलिक हैलाइड्स। Firstly, let's see what are allylic carbons. Allylic carbons are the carbons whose atom bond that are again repeating. Allylic carbons are carbons atoms bonded to a carbon atom that is doubly bonded to the another carbon atom. For example, this is drawing the structure of benzene again. Okay, this is which structure? This is benzene, right? तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस बेंजीन में कुछ चेंजेस कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड लगा दिया मैंने। ठीक है, अब देखो ये जो कार्बन है इसका जो अगला बॉन्ड है कार्बन, उस पर डबल बॉन्ड है ना। सिमिलरली यहाँ पर भी अगर मैं इसको यहाँ पर भी लगा दूँ तो ये दोनों कार्बन क्या होंगे मेरे लिए? हेलेलिक कार्बन। हेलेलिक कार्बन्स। ठीक है, अब यहाँ पर बोला हेलाइड्स। हेलाइड्स क्या होंगे? जब क्लोरीन लगा होगा ऐसे
ये बात है ना. So let's see. Can you see this example? This is your carbon attached to chlorine, hydrogen, and your alkyl group, that is methyl group, further attached to CH. Now can you see this group? अब जो ये कार्बन है जिस ग्रुप में सी एच के साथ अटैच है, अब सी एच ने आगे डबल बॉन्ड बनाया हुआ है, तो कार्बन क्या होगा आपका? एलिलिक हैलाइड. ठीक है, समझ आ गया उम्मीद है बच्चों, दिल के सच्चों. अब देखो बेंजिलिक हैलाइड्स, ये जो देख रहे हो आप, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, ये सारे बेंजिलिक हैं. Got it childrens? So hope so that you have got the idea कि बेंजिलिक क्या होते हैं. एक बार मैं फिर से रिपीटिशन करना चाहता हूँ आपके लिए कि एलिलिक में हमने क्या पढ़ा. एलिलिक कार्बन आर द कार्बन एटम्स दैट आर बॉन्डेड टू अ कार्बन एटम दैट इज डबली बॉन्ड. ठीक है, ये वो कार्बन होते हैं जो कि उस कार्बन के साथ अटैच होते हैं जो ऑलरेडी डबल बॉन्ड के साथ अटैच होता है, उसको बोलते हैं एलिलिक. बट अबाउट बेंजिलिक नाउ. Talking about benzylic, basically benzylic halides are those compounds. Benzylic halides are those compounds in which a halogen atom is attached to an sp3 hybridized carbon and attached to an aromatic ring. ठीक है, तो ये वो हैलाइड्स होते हैं. फॉर एग्जांपल देखो आप ये देख रहे हो प्राइमरी हैलाइड का, तो क्लोरीन उस एटम से अटैच है जो कार्बन ऑलरेडी इसी एरोमेटिक रिंग से अटैच है और ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है. अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं आपको, तो दिस वुड बी योर कार्बन विच इज अटैचिंग टू क्लोरीन. हियर यू आर हैविंग हाइड्रोजन and you're having again hydrogen and further attach. अगर आप इसको दिखाओगे तो इसमें सिग्मा बॉन्ड्स कितने बन रहे हैं? देयर आर 4 सिग्मा बॉन्ड्स. 4 सिग्मा बॉन्ड मीन्स इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3. एनी डाउट इन दिस? एनी डाउट इन दिस? ऑफ कोर्स नॉट. ठीक है, तो ये जो कार्बन है इसको बोलेंगे हम बेंजिलिक हैलाइड. ठीक है बच्चों, समझ आना चाहिए तुम्हें कि एलिलिक और बेंजिलिक में क्या फ़र्क है. तो ये जो आपका सेकेंडरी बेंजिलिक हैलाइड है, ये भी कुछ ऐसे ही ड्रॉ किया गया है. बट इसमें क्या है, मैंने आपको बताया था ना पहले, आर एक्स बॉन्ड कितने होने चाहिए सेकेंडरी में? 2. यहाँ पर कितने थे? सिर्फ एक बॉन्ड था आर एक्स का, और यहाँ पर कितने? 1 2. सिमिलरली टर्शरी में कितने होंगे? 3. ठीक है, तो ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी तो चलता रहेगा, बस फर्दर क्लासिफिकेशन आपकी होती रहेगी आगे आगे. ठीक है, अब देखो नेक्स्ट आता है आपके पास कंपाउंड कंटेनिंग sp2 हाइब्रिडाइज्ड CX बॉन्ड्स. अब इसकी क्लासिफिकेशन आपके 2 टाइप से होती है. एक होता है आपके पास विनाइलिक और विनाइल एंड एराइल. विनाइलिक क्या होते हैं? These are the compounds in which halogen atom is bonded to sp2 hybridized carbon. ये आपके पास halogen है, thus it has been connected to that carbon whose hybridization is sp2. Hence, what does it means? It means it is your vinylic halide, right? If I draw one more structure here, if I draw this structure somewhat like this, I am having double bond attached to X. This is also an example of vinylic halide. Why? Because this halogen is attached to that carbon which is already having double bond, right? और I mean to say that is because double bond का मतलब क्या होता है? एक होता है sigma and another would be your pi. Pi means no hybridization, because
hybridization is due to either of lone pairs or due to the sigma bonds, right? Got it. A similar thing is given that aryl halides sp2 hybridized. Now this is also aryl halides. What are aryl halides? So firstly, let me show you the vinylic halides. Halogen atoms are bonded to sp2 hybridized carbon of the carbon टू कार्बन डबल बॉन्ड, बिकॉज ये तो नॉर्मल सी बात है, अगर डबल बॉन्ड नहीं होगा तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन कैसे होगी sp2? आप बता सकते हो? ठीक है बच्चों, नहीं बता सकते आप? तो ये कुछ ऐसे होते हैं वेनिलिक। इसके एग्जांपल देख लो आप एक बार। एग्जांपल कंटेन्स हियर दिस, कि जो कार्बन है एक ऐसे कार्बन से अटैच है, और ये जो हेलोजन है एक ऐसे कार्बन से अटैच है, जो कि ऐसे कार्बन से अटैच है जिसने डबल बॉन्ड बनाए हुए हैं। मीन्स इसकी हाइब्रिडाइजेशन चेक करेंगे तो क्या आएगी? sp2। ठीक है। सिमिलरली हियर इन दिस केस। नेक्स्ट टॉक अबाउट द aryl halides. What are aryl halides? Basically, when the halogen atom is directly bonded to sp2 hybridized carbon of an aromatic ring, क्या है? जो आपका हेलोजन एटम है वो डायरेक्टली अटैच है sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से ऑफ एन एरोमेटिक रिंग। जो आपका ये एराइल हैलाइड है ना, दैट इज बेसिकली सपोर्टिंग द फैक्टर ऑफ एरोमेटिसिटी। ये देखो, जैसे ये आपका बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट है ब्रोमीन एंड योर मिथाइल ग्रुप। ठीक है, ठीक है ना, इसमें कोई डाउट नहीं। अब आप देख सकते हो इन दोनों ही केसेस में जो आपके पास कार्बन है उसकी हाइब्रिडाइजेशन है sp2। हाउ sp2? मैं आपको दिखाऊं कैसे। ये देखो, फिर कितने सिग्मा बॉन्ड्स है इसमें? 1 सिग्मा बॉन्ड, 2nd सिग्मा बॉन्ड एंड 3rd सिग्मा बॉन्ड। 3 सिग्मा बॉन्ड से sp2 ही बनेगी, sp3 तो नहीं बन जाएगी। सही बात है। हेंस दिस इज डन। गॉट इट? नोमेनक्लेचर। तो अभी तक मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ हमने क्या किया। हमने अभी तक एक रिवीजन, अभी मैं आपको एक रिवीजन रिकैप्चुलेशन टूर दे देता हूँ कि हमने क्या क्या ही किया। सॉरी। तो देखो, हमने पहले क्लासिफिकेशन की ऑन बेसिस ऑफ नंबर ऑफ halogen atoms attached. Second would be on the basis of carbon containing, basically on the basis of कि जो आपका हाइड्रोजन हेलोजन है वो कैसे अटैच है, sp2 से अटैच है या sp3 से अटैच है। ठीक है, तो ये हमने जर्नल अभी तक क्लासिफिकेशन की। अब देखो, ऑन द बेसिस ऑफ हेलोजन में हमने इसमें किया मोनो, डाई, ट्राई, पॉली, हेलो एल्कीन। ऑफ कोर्स उसके आगे मोनो हेलो एल्कीन, डाई हेलो एल्कीन, ट्राई हेलो एल्कीन, पॉली हेलो एल्कीन, राइट। सो फर्स्टली हमने ये किया। अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन में आपने क्या किया? हमने यहाँ पर ये किया कि जो आपके पास हमारा ये था ना,
हमने इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया। फर्स्ट वन थी आपकी एल्काइल हैलाइड्स। एल्काइल हैलाइड्स क्या है कि RX बॉन्ड आपका कितनी बार अटैच है, उसमें हमने फर्दर 3 क्लासिफिकेशन की, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। ठीक है, ये हमने किया उसमें, इसमें कोई डाउट नहीं था। ठीक है, पहले बारे में। अब इसी के अंदर हमने सेकंड की एलेलिक हैलाइड्स की। एलेलिक हैलाइड्स क्या है बच्चों, जिनके सच्चों कि जो भी कंपाउंड्स आपके मीन्स हेलोजन एटम उस sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से अटैच है जिसके एडजेसेंट वाला कार्बन पे डबल बॉन्ड हो। ठीक है, हेलोजन उस कार्बन से अटैच है जिसके एडजेसेंट कार्बन पे डबल बॉन्ड हो। ठीक है, तो वो आ जाएगा आपका एलेलिक हैलाइड। अब सेकंड हमने की, फिर हमने थर्ड की थी इसकी, ये थी इसकी सेकंड है ना। इसमें हमने थर्ड क्या किया था, हमने थर्ड में कुछ ऐसा किया था कि ये तो हो गया आपका एलेलिक। हमने थर्ड किया था बेंजलिक हैलाइड्स। जब आपका हेलोजन एटम बॉन्ड with sp3 hybridized carbon that has been attached to the aromatic ring। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि मतलब जो भी कंपाउंड, जो भी आपके हेलोजन्स एटम्स हैं वो उस sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच हैं जो कि फर्दर एरोमेटिक रिंग से अटैच हो। ठीक है, इसके मैंने आपको काफ़ी एग्जांपल दिखाए थे और sp3 हाइब्रिडाइज पे हमने 2 किए थे, विनिलिक एंड एराइल हैलाइड्स। ठीक है, सो नाउ लेट्स बिगिन विद द नोमेनक्लेचर। अच्छा, नोमेनक्लेचर होता है क्या बेसिकली, इट इज़ द नेमिंग ऑफ द मॉलिक्यूल्स, और ये किसके द्वारा प्लान की जाती है, IUPAC और IUPAC बोलते हैं इसको, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। राइट, now see children the nomenclature of the alkyl halides. So what thing you need to observe here, the biggest thing that you need to observe here is that nomenclature of the alkyl halides, basically this could be classified on the basis of 2 names, common names or IUPAC name। और ये जो कॉमन नेम होते हैं ये होते हैं नेम ऑफ एल्काइल ग्रुप, जो भी आपने एल्काइल, फॉर एग्जांपल कॉमन नेम, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, अगर मैं ओके एग्जांपल मैं आपको बाद में दिखाता हूँ, पहले आप ये देख लो। अगेन नोमेनक्लेचर, देखो ऑर्डर ऑफ द नेमिंग ऑफ द हेलोजन कंपाउंड्स। F means fluoro, Cl means chloro, Br means bromo, I means iodो। ये तो आपके प्रीफिक्स होंगे ही होंगे। ठीक है, इनके बिना कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अब वर्ड रूट में क्या होती है, लाइक फर्स्ट कार्बन पे मिथ, सॉरी 1 कार्बन हो गए मिथ, 2 होंगे इथ, 3 होंगे प्रोप, 4 होंगे ब्यूट, लाइक दिस। और फिर प्राइमरी सफिक्स मीन्स एन इन आइन। एन मीन्स, व्हाट डज एन मीन्स बता सकती हो, सिंगल बॉन्ड, इन मीन्स डबल बॉन्ड एंड इन मीन्स इन एंड आइन, आइन मीन्स ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल 1, ये क्या गिवन है, ये दिख रहा है आपको, ये क्या गिवन है एक्चुअली, कितने कार्बन है, आप इसका नाम बता सकते हो मेरे को, कितने कार्बन है पहले बात। If I count the number of carbons, 1 carbon, 2 carbon, 3 carbon, 3 carbons, it means it must contain prop, prop तो ऑलरेडी है बट सब्स्टिट्यूट क्या है, वो है
ब्रोमाइड, ठीक है। सॉरी, एक्चुअली माई थॉट इज़ नॉट वेल, दैट्स वाई माई वॉइस इज चेंजिंग। आई होप ये रिफ्लेक्ट हो रहा है वहाँ पर। देखो यहाँ पर काउंटिंग दिखाई भी गई है, 1 2 and 3, 1 carbon, 2 carbon and 3 carbon. This is what, this is your 1 bromo plus कितने कार्बन है? 1 bromo propane. This is IUPAC name, 1 bromo propane. नेक्स्ट आप ट्राई करना चाहोगे? यस, ओके, ट्राई दिस नाउ, ट्राई, come on, tell me its name. How many carbon atoms are there? 4, right? So उसके लिए आप क्या यूज़ करोगे? आप यूज़ करोगे ब्यूट। सारे सिंगल है तो ए लगा सकते हैं। ये क्या है? 1 क्लोरो ब्यूटेन। आंसर चेक करें, 1 क्लोरो ब्यूटेन, ठीक है। आपके साथ ही किया मैंने भी। ओके, तो दिस वुड बी योर होमवर्क, राइट? ट्राई दिस, try this structure. What do you think what this structure name would be? ब्रोमीन अटैच है, हम बोल सकते हैं इसको, ये बोल सकते हैं दिस इज even 1 ब्रोमो साइक्लोपेंटेन, इसको बोल सकते हैं हम 1 ब्रोमो साइक्लो पेंटेन. The second one would be your chlorine. Your chlorine is attached, right? So you can name it like chlorine attached है, ठीक है। तो क्लोरीन 1 पोजीशन पे और कौन सी पोजीशन पे? 1,3 chlorohexane, chlorocyclohexane. Let's see the answer. I had depicted the answers. Let's check the answers now. Yes, this is your bromocyclopentane, and this is your 1,3 dichlorocyclohexane. Yes. So now questions are in the front of you. Give the IUPAC name for these. Okay, solution is also provided. Now quickly do it and say the solution. Right, ठीक है, कर लोगे? अब आगे चलूं, बताओ। नेचर ऑफ द CX बॉन्ड, ठीक है। अब देखो, आपको पता है the carbon center is sp3 hybridized in the alkyl halides and CX bond is polarized as shown below because of the great electronegativity of the halogens. आपको ये पता होना चाहिए that halogens are electronegative in nature. अगर आपके पास ये कार्बन है और ये X के साथ अटैच है, दिस इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी साइड करने की कोशिश करेगा, ऑफ कोर्स करेगा। तो उसकी वजह से
इसमें पार्शियल नेगेटिव डेवलप हो जाएगा, इसमें पार्शियली पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। ठीक है, 1 minute, let me also show you below. Yes, now think why the following. Now these questions may be framed by the examiner. Now you have to think these questions. After that I will be discussing the physical properties, right? The CX bond in the haloalkane is polar in nature because of electronegativity. CX bond length increases as CF CACl, because आपको पता है फ्लोरीन सबसे स्मॉल आइटम होता है। उसके बाद आफ्टर दैट क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, आयोडीन की रिएक्शन सबसे स्लो होती है, सो बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन and iodine. CF bonds are less reactive as compared. Oh, I think there is some type and mistake. Basically यहाँ पर आना चाहिए CI bond is less reactive as compared to that of FCF. If I'm talking about the order of dipole moment, you can clearly see chlorine having maximum dipole moment, after that fluorine, after that bromine, and in the end it would be your iodine, right? Right, is it clear? So here remember iodine and fluorine. I will also correct this mistake. The dipole moment of the chlorobenzene is lower than that of cyclohexyl chloride. Now let's see the physical properties of the haloalkanes and haloarenes. First one is your solubility. Now in the case of solubility, haloalkanes are not able to form the hydrogen bonds with water even though they are polar nature. They are practically insoluble in water. However, the soluble organic solvent like alcohol and benzene, etc., they are soluble in the organic solvent like alcohol, ethers and benzene. So remember that haloalkanes are not able to form the hydrogen bond with the water because water do not have that sufficient capacity to break its power. Okay, so hence these are practically insoluble, and this question may be asked by the examiner that why do you think that why the haloalkanes are not able to form the hydrogen bond with water even though they are polar in nature? Because the reason is that water do not have that capability to dissolve in the means to break its intermolecular forces among them, between them. Okay, so talking about the physical states, you can have the guess from here that methyl chloride, methyl bromide and ethyl chloride, as well as chlorofluoromethane, these all are gases. So you can see maximum of these compounds are in the gaseous forms. However, some may be liquids and other may be solids, but these are referable when these are higher alkyl halides up to carbon 18, when the chains would be large, because these are very small bonds, not very big. But if the alkyl halides are up to carbon 18, means 18 कार्बन होते हैं एक चेन में, of course that is become very heavy and hence the physical states become solids and liquid, but maximum of these are said to be what? Gases only. So this is your ethyl bromide structure. It turns yellow when exposed to light and air. Ethyl bromide, remember.
Now discussing the boiling point, the boiling of the alkyl chlorides and the iodides follows the order. Ri के पास सबसे ज़्यादा बॉइलिंग कैपेसिटी होती है, सबसे ज़्यादा, ठीक है. Remember that with increase in size of halogen, the magnitude of the van der Waals increases and the boiling point also increases. जितना बड़ा साइज होगा उतनी ज़्यादा van der Waals फोर्सेस होगी. बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि अगर मैंने जस्ट चेंज द पेन थिकनेस, अगर मैंने ये दो आइटम्स बनाए हैं, अब इनका साइज जितना बड़ा होगा उतने इनके बीच में van der Waals इंटरेक्शंस होगी. बिकॉज van der Waals इंटरेक्शन इज लाइक वी कैन से इट्स यूनिवर्सल इंटरेक्शन. हर एक चीज़ में, अगर कोई भी चीज़ में कुछ भी नहीं हो तो van der Waals एटलीस्ट होगी. तो विद इंक्रीज इन साइज, अगर मैं इंक्रीज करूँगा साइज ऑफ your halogens, then what will happen? The magnitude of the van der Waals forces would increase. It would increase. Remember this thing. Hope so you will remember. Okay, see guys here. Your Ri bond. Your Ri bonds having maximum boiling point. Why? बिकॉज आपको पता है आयोडीन का साइज इज़ वेरी लार्ज इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ ब्रोमीन, क्लोरीन एंड फ्लोरीन. अब देखो हम फ्लोरीन को तो इंक्लूड ही नहीं करते बिकॉज इतना रिएक्टिव मेटल है कि आप सोच भी नहीं सकते. ठीक है, फ्लोरीन को इसलिए हम यहाँ पर इंक्लूड ही नहीं करते. तो सिमिलरली यू हैव टू रिमेंबर दैट Ri having maximum boiling point due to its larger in size, because larger the size van der Waals interaction would be great. Yes, is it clear? So also for the same of the halogen, boiling point of the haloalkanes increases with the size of the alkyl group. ठीक है, haloalkane के लिए भी ये बात valid है, not just for your these halogens. ठीक है, remember van der Waals force is directly proportional to boiling point. ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, बिकॉज अगर इंटरेक्शंस बढ़ेगी तो बॉइलिंग पॉइंट को भी बढ़ना पड़ेगा, मतलब उतनी ताकत लगेगी उनको तोड़ने के लिए. Showing you the order of the boiling point, you can clearly see it decreases like this. अगर जितनी ज़्यादा चेन उतनी कम इंटरेक्शंस होगी तो उतना ही boiling point increases with increase the number of carbon atoms. Sorry, I had just what I spoken was wrong. Actually what's the case, अगर आपके जितने जितने कार्बन बढ़ेंगे तो उतनी स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, तो उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन बढ़ने के कारण आपका बॉइलिंग पॉइंट अपने आप इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है, ठीक है, द बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस because of the means by increasing the number of carbons in a chain, that chain's boiling point would definitely increases, because अगर कार्बन है तो वो कुछ ना कुछ करके इंटरेक्शन बनाएगा. ठीक है, hence this order, this is the order which is being followed here, right? The effect of the branching. They're talking about the effect of branching in the boiling point. You can clearly see here that with increase in branching there is continuous decay in the boiling point. So by increasing the branching, the boiling point decreases. By increasing the branching, the boiling point decreases. This is also in the periodic table. They are showing that along
the periods, your boiling point increases like this, like fluorine having maximum, then chlorine, then bromine, then iodine having least maximum boiling point. फ्लोरीन का 19 होता है. दिस इज बेसिकली एटॉमिक नंबर. तो आपको ये भी पता होना चाहिए, अगर एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, बिकॉज एटम उतने ही बड़े होंगे, वंडरवॉल इंटरेक्शन उतनी ही बढ़ेगी, बॉइलिंग पॉइंट उतना ही बढ़ेगा. ठीक है, मैंने आपको अभी चुटकी में रिकैप्चुलेट करवा दिया है. Talking about density, you can clearly see here that polychloroalkanes, that is CH2Cl2, its density is 1.336, and CHCl3 its density was 1.4. So you can clearly see, जैसे जैसे आप क्लोरीन एटम को बढ़ा रहे हो, क्लोरीन बढ़ रहा है, तो जो आपकी डेंसिटी है वो भी इंक्रीज कर रही है. सो इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स. ठीक है, ये क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बताओ, नहीं होना चाहिए. ठीक है, डेंसिटी एक बार फिर से मैं दिखा देता हूँ. अब डेंसिटी का क्या मतलब होगा कि अगर आप इसको ऐड करोगे अल्काइल फ्लोराइड्स और अल्काइल क्लोराइड्स को, तो आप देखोगे सेटल हो जाएंगे, दे विल फॉर्म एंड प्रेसिपिटेट. ठीक है, next would be your the preparation of alkyl halides, and I would like to take this thing in my part 2. Today I had discussed the classification, the nomenclature, and the nature of CX bond, and after that the physical properties. So that's all. I can take only this much within an hour. Hope that you have clearly understood each and everything. Thank you to be a patient listener. Have a nice day. Yes, don't forget to like, share and subscribe my channel. Don't forget to like it, and do share this video with your friends, and also press the bell icon along with that red button of subscribe. Thank you.